So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that from Monday to Saturday at 8 p.m. we are having the Hindu analysis, and today is 20th September. So let us begin with today's class. Am I audible, visible? So generally on Saturday I take the class. Generally the class is taken by Govind sir, but on Saturday I take the class. So let us begin. Am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. अगर मेरी आवाज आ रही है आप yes लिख दीजिए comments. Is my voice clear? Is my voice clear? Saransh, Ashur. Yes. Okay, fine. So basically, this is actually the first page article. So the first article says 2 Assam Rifles Jawan killed in Manipur attack. So this we will be discussing. And on the right, there was an article about Supreme Court citing preamble. Okay. So I'm sure you must be aware, we have seen that there has been some issues in Manipur, right? There have been a conflict, you can say, between Maitis and Kukis. So for that, if you are interested to know in detail about what is the tension, so you can watch this class. Just search this on YouTube. So almost 7-8 months back, the Chief Minister of Manipur, Mr. Biren Singh, had resigned. So since then, there is a precedent rule in Manipur. So can you please tell me which article is invoked to enforce precedent rule? कौन सा आर्टिकल इन्वोक किया जाता है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए? And in precedent rule, it is actually the governor who has all the powers. So who is actually the governor of Manipur? बताइए दोनों. तो जैसे ये इवेंट हुआ ना, तो सिर्फ ये इवेंट के साथ उसके आसपास की सारी all the things associated with that becomes important. Yes, Article 356 is present rule. Yes, Mr. Ajay Kumar Bhalla is the governor. Yes, very good, very good. So, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूंगा. There's one more question. Mr. Ajay Kumar Bhalla has been given an additional charge of another state. Which is that state? And why? Yes, Krishi Sachdeva, very good, you're right. He has been given, he's the governor of Manipur and he has been given the additional charge of Nagaland. But why? Because on 15th August 2025, the Nagaland governor, Mr. La Ganesan, died. Okay, so that is what you should be knowing about. Yes, very good. People are writing. Great. So I'm very happy that you all are answering it. It means it shows that yes, you all are serious. So now 2 Assam Rifles Jawan killed. So that is what you should know. Assam Rifles is actually a paramilitary force. Paramilitary force is like somewhere between army and police. You can understand like this. Okay. 5 Jawans injured seriously in ambush by unidentified terrorists. Official suspects involvement of Meitei insurgent group. That is what they are talking about. Or People's Liberation Army, etc. So I'm sure you must be aware there have been conflicts between so in this class. Okay. So 2 Assam Rifles Jawan were killed and 5 were seriously injured by an unidentified terrorist in Nambol area of Bishnupur district in Manipur. So you can see it here. This is the photo of Mr. N. Biren Singh, the former chief minister, also there at the RIMS hospital. Okay. So एक People's Liberation Army. Please understand, PLA जो है ना, वो तो एक चाइना की military force है, army को कहते हैं. But here this is some different band organization called as People's Liberation Army. Based Meitei insurgent group. That is what the article says. Okay, the outfit banned since 1979 seeks the secession of Manipur from India. So that is what the article says. Secession मतलब होता है they want to come out of India. They don't want to be a part of it.
That is what the article says. The ambush occurred on National Highway 2, the same road used by PM Modi to travel to Imphal airport to the hills of Churachandpur district on 13 September. So जो अटैक हुआ, ambush मतलब वही अटैक, वो जो है उसी रास्ते पे हुआ जिस रास्ते पर मोदी जी गए थे कुछ दिनों पहले 13 सितंबर को. So that is what you should be knowing. And since February 13, Manipur is actually under president's rule. ठीक है. So 13 फरवरी से प्रेसिडेंट रूल पे है मणिपुर. तो ये आपको पता होना चाहिए. Okay, you can read about this, and I'm sure you must be aware of spies there, etc. Okay, CLAT aspirant, आप इसको सर्च करना ना YouTube पे, ये वाली लाइन, just search this, you will get that video. YouTube पे जाके सर्च करना what you're asking. Now let's talk about another article. Supreme Court cites preamble to reject plea against Banu Mushtaq opening Dasara in Mysore. Please tell me why was Banu Mushtaq famous this year? A very important event happened related with her this year. Can anyone tell me? Booker Prize नहीं, correct. The correct is International Booker Prize would be the most perfect. ठीक है, हालांकि लिखा हुआ है, but आप आंसर करोगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज बिकॉज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. ठीक है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक फॉर विच शी गॉट दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो विनर है इंटरनेशनल अवार्ड याद रखना ना. हार्ट लैम्प, यस, ट्रांसलेटेड बाय दीपा बास्ती. वेरी गुड कृषि सरदेवा. हाँ, तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूरा याद रखिएगा. 2025 विनर बानु मुश्ताक एंड दीपा बास्ती. Okay, why? This is the book Heart Lamp. ठीक है, देखो क्या लिखा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025. बानु मुश्ताक इज द ऑथर, बट शी हैज रिटन इट इन विच लैंग्वेज? कौन सी भाषा में उन्होंने लिखा है? रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज, राइट? आदित्य, वेरी गुड. हाँ, एंड दिस हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय दीपा भास्ती. सो व्हाई ट्रांसलेटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है प्राइज. ठीक है. So translator has very important role. It has to be translated in English. Then only, of course, international Booker prizes will be given. Okay. Originally written in Kannada language, which is spoken in the state of Karnataka. Okay. So what happened was basically the Supreme Court cited preamble. What happened was actually she, I think, inaugurated some Dasara festival. There is some Mysore. There is a Dasara festival, which is actually where. I think it belonged to Hindu religion as far as my knowledge is concerned. So someone filed a petition that why she was allowed to initiate or inaugurate that. Okay. So after that, so someone, there's a petitioner, Mr. H.S. Gaurav, he had filed the petition. So in response to that, the judges have said that please read the preamble. Now, so basically, when we are talking about preamble, the court emphasized that the event was conducted by state of Karnataka, means it is a government government had organized it, which is a secular and maintains no religion of its own. So these are the things we are talking about. Now, when it comes to preamble, the first thing is that which words, now we are talking about preamble, which words were added later on, it was not present. सर वो वीडियो नहीं मिल रहा, आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा. मैंने आज ही सुबह सर्च किया ये वाला वीडियो, यही पूछा हो ना. दिस आई सर्च इन द मॉर्निंग, आई गॉट दिस. ये पूरी लाइन सर्च करोगे, आप सब्सक्राइब किया रहोगे चैनल को तो मिल जाएगा. ठीक है. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीएम्बल, तो ये टॉपिक्स में ये प्रीएम्बल चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. न्यूज से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है ना. सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, वेरी गुड कृषि सचदेवा एंड दिशा बदाला, यू आर आल्सो राइट. ठीक है. सो एक्चुअली 3 वर्ड ऐड किया गया था लेटर ऑन, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और नीचे में होगा इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है. नाउ दीज 3 वर्ड्स वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? हाँ, लोगों ने लिख दिया, वेरी गुड, वेरी गुड कृषि सचदेवा. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 1976. Okay, now I have one question. So
Is it so that India became socialist, secular, or was having integrity only after 1976, or even India was secular or socialist even before the amendment, before this was inserted? Even before, yes. So basically ये तो एक symbolic, जो preamble में जो words लिखे हैं, these are symbolic. Socialist means like for example DPSP, Directive Principle of State Policy. ये पूरा socialist ideas ही तो है. We call it as social economic justice. Okay. Now integrity क्या 42nd amendment से पहले इंडिया integrity में नहीं की बात नहीं करता था. Of course there was there. Now these are symbolic terms. Now secularism here means not like there is no state religion and treating all the people of all religion equally. So Article 14, equality before law. Then we have universal adult franchise. Everyone 18 plus, irrespective of religion, race, caste, gender, can vote. And you can read Article 325 and 326. Okay. So this was even there. Yes, it is actually symbolic, right? And we have done a different detailed class if you are interested to know about preamble in this video. ठीक है, इसको search करना. Maybe sometimes in some exam they are being asked. Okay. तो चूंकि प्रियम्बल की बात हुई इसीलिए पूछा जा रहा है ना. अच्छा, एक चीज और है. Secularism is a basic structure of the constitution. The Supreme Court said in a which famous judgment. ये तो अभी इसको रिपीट किया गया, but it had originally said in which, है ना, judgment, a very famous judgment. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म बोथ आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. केशवानंद भारती बेरुबारी ना आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. नहीं, केशवानंद भारती केस में द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन, बट द मोस्ट फेमस जजमेंट इन दिस रिगार्ड इज एसआर बोमई केस. ठीक है. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका. 1992 के आसपास जजमेंट आया था. 1988 में कुछ इवेंट हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में था. यस, एसआर बोमई. यस कार्तिक, वेरी गुड. So SR Bommai was actually the chief minister of Karnataka. इनके नाम पर एक केस है. So federalism, the Supreme Court said federalism, secularism, these are actually basic structure of constitution. देखो, concept of basic structure came in Keshavananda Bharati case, no doubt about it. But later on over the years, Supreme Court has said that this is basic structure, this is basic structure, this is basic structure. Okay? तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कई सारे केस में बताया कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, लाइक दैट. ठीक है. सो दिस वाज इंसर्टेड. देन ऑफ कोर्स इट इज आल्सो रिलेटेड विद मिसयूज ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356, क्योंकि आज हम लोग ये भी डिस्कस किया था ना. यस कार्तिक, वेरी गुड. हाँ. सो एसआर बोमई केस इज आल्सो रिलेटेड विद दैट देयर शुड नॉट बी मिसयूज ऑफ 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल. ठीक है. तो इसी समय ये सब बातें उस टाइम पर कही गई थी. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. Now let's, sir, what is बेरुबारी केस? बेरुबारी केस वो था लैंड एक्सचेंज था बांग्लादेश से, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है 1960s. नो नीड टू गो इन बेरुबारी केस राइट नाउ. ठीक है. अगर आएगा न्यूज में तो आप जा सकते हो. ठीक है. Let's talk about this very important thing, and I have decided to schedule a class on Wednesday at 3 p.m. because I think I found that to be important. It was coming in the news. Saudi-Pakistan pact. Now, please tell me what is the pact? Can anyone write in the comment? ये क्या था? क्या है? Otherwise, I will be having a detailed class, but I just wanted to know. अभी रिसेंटली कुछ पैक्ट हुआ है सऊदी अरब एंड पाकिस्तान के बीच. And should we be concerned, etc.? Is it a bad news for us? Good news? क्या आपको लगता है? Attack on one and attack on both. Like Article 5 NATO. Very good. Krishi Saldeva. हाँ, great. Shruti, Aryan, you all are right. हाँ. पाकिस्तान में प्रोवाइड न्यूक्लियर वेपन. हाँ. तो ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे. इसका नाम याद रखिए, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इन रियाद इन सऊदी अरब. ओके. एंड सो पाकिस्तान आर्मी चीफ एंड दीस थिंग्स वेयर देयर एंड ऑल. तो
तो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल इन दिस टॉपिक बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस इट सेपरेटली ऑन वेडनेसडे 3 PM. लेकिन एक दो चीज मैं पूछूंगा, है ना. ग्राउंड इम्पैक्ट ऑन साउथ वेस्ट एशिया. अच्छा, ये आपको पता होगा, दीज टर्म्स यू शुड नो. ये कौन सा रीजन कहलाता है? दिस कंसिडर्ड एज वेस्ट एशिया ना, बिकॉज इस टर्म यूज किया हुआ है, साउथ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, है ना. ओके, सो हाँ, मिडिल ईस्ट भी कहलाता, राइट. सो इसको वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट सब कहते हैं. वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इवन जो पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्री, इसको गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं, गल्फ कंट्रीज. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना. तो खैर, ये हिस्ट्री में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उतना हिस्ट्री वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा मैं देखूंगा, अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो विल डिस्कस ऑन वेडनेसडेज क्लास. ओके, एक जो उन्होंने यूज किया है वो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ठीक है, आप बताओ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू ऑप्शंस. ठीक है, सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, एंड ये वाला जो है कतर है. ठीक है, ऑप्शन 4. आउट ऑफ दीज 4 विच इज नॉट द मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? वेरी गुड, ये मैंने, हाँ ठीक है. तो एक तो इंटरेस्ट वाइज भी आप देख लोगे थोड़ा सा, बट आप समझो पर्शियन गल्फ की बात हो रही है ना. तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, लेट मी, और यहीं पे बनाते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा क्लियर है. देखो, ये कुवैत है, ये सऊदी अरब है, ये ओमान है, दिस इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वाला कतर है. ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सब न्यूज में भी है. और इसके ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है, वो मैप में विजिबल नहीं होगा, इसको कहते हैं बहरैन. बहरैन कैपिटल इज मनामा. ठीक है, तो ये सब गल्फ कंट्रीज है, जो मतलब पर्शियन गल्फ की कंट्रीज है. तो अब आप देखोगे, सो 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6 कंट्रीज ही है. तो 6 कंट्री हो रहा, देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. जो जो जिसका इसका नाम मैंने ब्लू से लिखा है वही है. तो यमन जो है गल्फ को तो टच भी नहीं कर रहा है. अब बोलोगे सर ईरान भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ईरान से थोड़ा सा इश्यूज थे. आप तो दे आर इंप्रूविंग द रिलेशनशिप, बट वो थोड़ा इश्यूज थे, आपको पता होगा, है ना. तो ये जो जो गल्फ को टच करेगा, उन लोगों ने अपना गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बना रखा है. कुछ लोग बोलेंगे सर ओमान तो नहीं टच करा, बट ओमान का ये वाला भी हिस्सा है, ये ओमान का हिस्सा है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो ये वाले रीजन में कंट्रीज जो है वो जीसीसी का मेंबर है, एक्सक्लूडिंग ईरान, है ना. और इन लोगों के पास ऑयल, नेचुरल गैस काफी ज्यादा होता है. नाउ अब यहां पर एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का आपको नाम बताना है. ठीक है, क्वेश्चन आया था, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ये चाबहार पोर्ट पर क्वेश्चन आया था कि चाबहार पोर्ट इज इन गल्फ ऑफ ओमान. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. एंड रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन सम डिसीजन रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट, सो इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. हाँ, ये वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्टिंग गल्फ ऑफ ओमान विथ पर्शियन गल्फ. बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर न्यूज में आता है. ठीक है, सो व्हाट इज द न्यूज रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट? कोई बता सकता है एनीवन? That was recently in the news. Donald Trump has taken some decision which might not be a good news for us. Yes, removed sanction waiver. तो जो sanction मतलब they have put sanction on Iran that you cannot do trade with Iran, but it had given, like USA had given exception कि चलो ठीक है भाई, चाबार इंडिया बना सकते हैं, है ना. But now they have withdrawn it, so of course for all practical purpose it at least appears to be a bad news for us. देखते हैं आगे क्या होता है. लेट्स सी फॉर द फ्यूचर, बट करंटली ही इज टेकिंग सम स्ट्रिक्ट डिसीजन. रिसेंटली हैज टेकन सम डिसीजन ऑन H1B वीजा. आई थिंक आज ही न्यूज में था, मॉर्निंग में आई सॉ. तो वो भी देखते रहिएगा. ठीक है, खैर, सो दीस आर द थिंग्स. रियाद में इसका हेडक्वार्टर है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का. ओके, तो इस सब की SMDA जो है वो अग्रीमेंट की बात हो रही है. ठीक है, सो हम लोग SMDA को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में. ओके, एक चीज और पढ़िएगा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. AQ खान, why he was famous or whatever is the case, but please read about him. What was that?
ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ये साइड में आर्टिकल, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, मिस्टर राहुल गांधी हैज अगेन पुट सम एलिगेशन ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो ऑफ कोर्स द आंसर तो शुड बी गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन regarding this. And he has done another press conference. He accuses the election commission of inaction in a fraudulent involvement involving electoral rolls. Electoral roll क्या होता है? इसको electoral roll कहते हैं. इसमें आपका नाम है etc. So now he has put a lot of allegations that in the earlier things also that there are places where the same person's name is at the two place or at the two constituency or something like that. And these are the issues, है ना. While this allegation is an earlier press conference also, है ना, महादेव पूरा का earlier बात किया था. इस बार आलांद कोई जगह है. So he is actually talking about that there have been some fraudulent involving electoral rolls. यानी नाम जो add या deletion होता है उसमें fraud किया गया. That is what he has put the allegation. So if you are interested, you can watch it. आप खुद से जाके देख लो, है ना. Like I mean, watching the entire video is very difficult. पूरा देखना, but still जहाँ पे relevant हो आप जाके देख सकते हो if you are interested. तो वो बता ये रहे कि इट एक्नॉलेज फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू डिलीट वोटर्स नेम, यानी गलत तरीके से वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट किया गया है. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना. फॉर्म 7 मिसयूज, जब आप इलेक्टोरल रोल में नाम वगैरह भरवाते हो तो उसमें फॉर्म होता है, फॉर्म 7 वगैरह भरना होता है. सो इट शुड आल्सो स्टॉप प्रिवेंशन ऑफ फॉर्म 7 मिसयूज, स्पेशली टू स्टॉप वोटर रिमूवल बाय थर्ड पार्टीज एटसेट्रा. बहुत सारी चीज थी, तो अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, बट यही है कि मतलब द एलिगेशन वाज की the election commission should have helped the CID of Karnataka to unearth the fraudulent practices. That is what Mr. Rahul Gandhi has put allegation. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. और SIR में मैंने एक डिटेल क्लास लिया था. आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट आल्सो. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस पर भी काफी ज्यादा न्यूज में था. ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने कहा कि there have been some irregularities in this. Let's move on. A climate health vision with lessons from India. Okay, where will be having COP this year and which COP it would be? इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हो रहा है, कहां हो रहा है, आई वुड से, कौन सा COP होगा? यस, बेलेम COP 30, है ना. ये ब्राजील में जगह है. ठीक है, फिर बताएं कि जैसे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट हेल्थ हुआ था, ये सब. ठीक है, तो उन्होंने कुछ दे हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट एक पीएम पोषण है ना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एटसेट्रा. इंडिया फ्लैगशिप न्यूट्रिशन स्कीम है ना, मिड डे मील स्कीम एटसेट्रा. नाउ व्हाट इज दिस ग्लोबल साउथ, क्या मतलब होता है? मैंने कई बार बताया, आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. फॉर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ सीकिंग सिनर्जेटिक पॉलिसीज दैट एडवांस मल्टीपल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ? पहले ये पता होना चाहिए. आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स व्हाट इज ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ. हाँ, बिलो ब्रांड लाइन, बट व्हाट इज द आइडिया, वो है क्या चीज? डेवलपिंग कंट्री, हाँ, गुड. हाँ, सो बेसिकली एक लाइन है इमेजिनरी, ऐसे सोचा गया है. ठीक है, इसको ब्रांड लाइन कहते हैं. तो ब्लू वाली जो है ना, ब्रांड लाइन ऐसे लिखते हैं. तो इससे नॉर्थ में जो कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ. ठीक है, एंड दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज. और ग्लोबल साउथ, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स जो होती है उस ग्लोबल साउथ में ज्यादा होगा डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर डेवलपिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज. ऐसे इश्यूज तो हर जगह होता है, बट इट्स मोर इन देयर ना. तो जितने भी ऑल थिंग्स रिलेटेड, इवन फाइटिंग क्लाइमेट हेल्थ, सब में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, है ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर डेवलपिंग. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. देन दे आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस सिलेंडर यूज करना, है ना. पीएम उज्ज्वल योजना के अंदर गैस सिलेंडर बांटा गया वुमेन हाउस होल्ड में, है ना. ओके, तो अब ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना. सो व्हाई क्लीन कुकिंग फ्यूल, इससे क्या होगा? पॉल्यूशन लेस होता है. अदरवाइज पीपल यूजेस व्हाट? कोल, कोयला. गांव में क्या होता है, कोयला वगैरह यूज करते हैं अगर उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है. लेकिन अब वही प्रॉब्लम है, गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है, पैसा लगता है एक्सेट्रा, है ना. और इनफैक्ट जो खाना पका रही है, कोई लेडी है या मेल जो भी है, तो उनको प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स इट विल कॉज इम्पैक्ट इफ यू आर यूजिंग कोल टू कुक द फूड, इट विल इम्पैक्ट योर लंग्स एटसेट्रा आल्सो. अच्छा, यहाँ पे ब्लू सा कौन सा है? नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. फ्रेंच गुयाना.
चलो अब आ गया तो पूछ ही रहे। तो ये जो है ना फ्रेंच गुयाना है, ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की, तो ये फ्रांस है, ये फ्रांस है ना, उसी का पार्ट है, तो डेवलप रहेगा ही। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंच गुयाना से देयर इज अ वेरी फेमस प्लेस फ्रॉम वेयर सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड। अब आप नाम बताइए। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लैट 3-4 years बैक, इट वाज आस्क्ड 2022 और 23 में पूछा था। कोरू, वेरी गुड कार्तिक। हाँ, कोरू इज अ प्लेस इन फ्रेंच गुयाना फ्रॉम वेयर सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड। सो द क्वेश्चन वाज, आपको बताना है डैश वाज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया दैट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, तो उन्होंने ये डैश बताया था, मैं आपसे डैश पूछ रहा हूं। दे हैड गिवन डैश एंड दे हैड आस्क्ड द आंसर वाज कोरू फ्रेंच गुयाना। यस, एप्पल, कैपिटल में लिखा APPLE। अच्छा, ना ही ये एप्पल सेब है, ना ही ये एप्पल वो मोबाइल फोन की कंपनी है। You have to be very careful. This is neither a fruit nor a mobile company. This is actually a communication satellite, first communication satellite of India, launched from French Guiana, Kourou. ठीक है, so sometimes हम लोग कहीं और से भी लॉन्च करते हैं। तो जो एक्चुअली यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज आल्सो हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस एंड पेरिस, एंड दे एक्चुअली लॉन्च सैटेलाइट्स फ्रॉम हियर। एरियन पैसेंजर पेलोड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अच्छा, आप एक बात बताइए, व्हाई दे हैव यूज्ड दिस प्लेस, व्हाई नॉट हियर? Can anyone tell me why French Guiana has been chosen as the place to launch satellites? Colonization in 2020. Yes, of course. Even today also colonization exists. जैसे यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया कहीं पे यहाँ पे जगह होगी, it is still controlled by France. They have given some sort of autonomy. तो आज yes, near equator. Even today also colonization exists. तो ये नहीं कहा सकता कि नहीं exist करते ना। तो somewhere here से ECB है ना, इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राजील, समवेयर है रफली, है ना, इक्वेटर गुजरता है। तो जितना नजदीक रहेगा उतना बल्ज अर्थ के, है ना, इसलिए साउथ में इंडिया में भी सतीश धवन स्पेस सेंटर, और जो नया ओपन हो रहा है वो तमिलनाडु में, इवन नियर टू द इक्वेटर। वो कौन सा है बताइए? So we already have Satish Dhawan Space Center, which is in South India, and another one is even southern to that. In Tamil Nadu, in Thoothukudi district, there is another spaceport that we are launching. What is that name? Please tell me. और भी जितना देखो, यूएसए लॉन्च करती फ्लोरिडा से, कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस सेंटर। ठीक है, फ्लोरिडा एकदम इक्वेटर के करीब से जाके, इतना बड़ा यूएस है लेकिन खोजे यहाँ नीचे। थुम्बा तो ही ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी देयर इन केरला, और वो साउंडिंग रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, बट दिस वी आर लॉन्चिंग इन तमिलनाडु, कोलासे कारीपट्टनम। वेरी गुड कार्तिक, ग्रेट। श्रीहरिकोटा वी ऑलरेडी हैव। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इक्वेटर के पास, कोशिश ये किया आता है दैट इट शुड बी नियर टू द इक्वेटर। खैर, ये सब बात हो गई, है ना। तो ऐसी तरह करते करते हम लोग, ऐसा मैं समझिए कि हम लोग भटक गए टॉपिक से, बट दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट। प्लीज डू नॉट कंसीडर दैट वी हैव डाइवर्टेड, बट बिकॉज दीज थिंग्स वर आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। तो ये बता रहे हैं कि एलपीजी से रिफिल्स, हाँ, अब देखो इशू क्या, भी टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, कि सिलेंडर्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाई नियर इक्वेटर, वी हैव टू एक्सप्लेन थ्रू फिजिक्स। ठीक है, देखो अगर कोई पूछ रहा है कि इक्वेटर के पास क्या होता है, देखो ये अर्थ है, अर्थ में अगर यहां पे रहेगा तो इतना सही से रिवॉल्व करेगा, और वही 24 आवर्स में ये वाला हिस्सा ज्यादा रिवॉल्व करेगा, राइट। सो यहां पर स्पीड फास्ट होती है, वन रीजन इज इक्वेटर के पास अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, है ना। एंड हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि अच्छा, उज्ज्वल योजना में सिलेंडर प्रोवाइड कर दिएगा टू इंश्योर पॉल्यूशन शुड बी लेस। ठीक है, बट उसको रिफिल भी तो कराना है, सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, है ना। द मेन चैलेंज आई वुड से इज प्रॉब्लमेटिक कह लो या चैलेंज कह लो, कि यू हैव टू, लाइक वी हैव टू इंश्योर दैट द पीपल हु आर बीइंग गिवन दीस एलपीजी सिलेंडर्स शुड अफोर्ड द सिलेंडर, है ना। तो ये भी है कि उनको पास सलाहियत होनी चाहिए कि वो दोबारा खरीद सके ना, इक्विटेबल एक्सेस, है ना। दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। स्ट्रीमलाइन कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। इज इट लैगिंग?
और दूसरा, यस कृषि सचदेवा, यू आर राइट, फायरवुड से या लकड़ी वाला जला के। दूसरी बात क्या होती है, अगर आप कोल वुड्स वगैरह जला रहे हो जैसे विलेज एरिया में, तो अगर आप वुड्स ज्यादा जलाओगे तो डिफॉरेस्टेशन भी हो जाएगा, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है ना? नो इट्स फाइन, है ना? सो दैट इज आल्सो द थिंग। ओके, खैर, तो ये सब बात हो रही है इन्वायरमेंट हैंडलिंग एटसेट्रा की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ना इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी मस्ट मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस। तो ये इस बैलेंस के बारे में आई विल डिस्कस इन द वेडनेसडे 3 PM क्लास, ठीक है? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, question is from my side for you, please answer it. I will discuss it in Wednesday 3 PM class, where I'll discuss the Saudi Pak defense pact. But I have one question: what are the interests of India in Saudi Arab, or why India should not worsen the relationship with Saudi Arab? इंडिया का सऊदी अरब में क्या इंटरेस्ट है, और क्यों इंडिया को रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए सऊदी अरब से, इवन इफ अगर पाकिस्तान ने डील कर लिया और समथिंग लाइक दैट? सोचिए, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए, फिर आपने पढ़ा भी होगा ऑयल, हाँ ठीक है। सो सिर्फ ऑयल है कि और भी कोई रीजन है? ट्रेड अग्रीमेंट्स, ऑयल, पोर्ट, इमिग्रेंट्स, हाँ गुड, इमिग्रेंट्स। कौन से सेंस में इमिग्रेंट्स, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर सकता है? मिनरल, ठीक है, ऑयल मिनरल, हाँ ठीक है। सीटा, सीटा, सीपा वी हैव साइंड विद यूएई, सऊदी अरब का, आई एम नॉट 100% श्योर सीटा साइन हुआ है। जॉब्स, यस, पर्निका खारे, वेरी गुड, सो इंडियंस आर डूइंग जॉब्स एट देयर, ठीक है। सो दीज आर वेरी गुड, हाँ, लेबर एटसेट्रा, तो वेरी गुड कि आप लोगों को बेसिक आइडियाज है, इट्स वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू नो। हाँ, ओके, है ना? एंड एक चीज इस पे क्वेश्चन आया था क्लैट 2020 में, अब्राहम अकॉर्ड। सो अब्राहम अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन व्हिच टू मेन कंट्रीज? अब्राहम अकॉर्ड, यस कृषि सचदेवा, वेरी गुड आंसर, ठीक है, आपने भी अच्छा आंसर किया। अब बताइए, अब्राहम अकॉर्ड विच वाज मेंशन इन द एडिटोरियल 2020 में, क्लैट 2020 से जस्ट पहले इंडिया साइंड इट एंड इट वाज इन द न्यूज़, नॉट इंडिया बट कंट्रीज साइंड इट, यूएस एंड अरब, इजराइल एंड सऊदी, ना brokered by US is fine, UAE and Israel, Shreyas, very good. ओके, सो बेसिकली मेन जो था वो इजराइल और यूएई के बीच एग्रीमेंट था, अब्राहम अकॉर्ड। बट ऑफ कोर्स इट वाज, आई थिंक यूएस वाज आल्सो देयर, देन बहरीन, एक दो और कंट्री था, छोटा मोटा कंट्री, बट मेन जो था दीज टू के बीच था, ठीक है? दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। नाउ आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन, इट हैज समथिंग रिलेटेड विद अब्राहम, व्हाट इज अब्राहमिक रिलीजन? ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम अब्राहम अकॉर्ड, एडिटोरियल में आ रहा है, तो द नेम, यू विल गेट टू नो द नेम, और इसी से कॉन्सेप्ट I2U2 निकला, आई विल टेल यू, है ना? इसलिए मैं, एंड मेनी पीपल हैव आस्क्ड व्हाट इज I2U2, इट अगेन कम्स इन द न्यूज़। हाँ, अब्राहम इज जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वेरी गुड श्रेयस। सो बेसिकली प्राइमरली 3 रिलीजन, जुडाइज्म, है ना, द फॉलोअर्स आर कॉल्ड एज जूस, है ना, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है? ओके, बिकॉज ऑल दीज 3 बिलीव इन द प्रॉफिट अब्राहम। ओके, अब देखो, इसके बाद क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट न्यूज आने लगी, एडिटोरियल्स में लोग लिखने लगे, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। इसमें क्या हो जाएगा? इंडो मींस वी आर एडिंग इंडिया, ठीक है? अच्छा, एक चीज आप बताना चाहिए, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, अब्राहमिक अकॉर्ड वाज ब्रोकर्ड बाय यूएस आल्सो, ठीक है? और भी एक दो कंट्रीज थे, आई थिंक बहरीन या वन मोर कंट्री वाज देयर, बट दीस आर द मेजर प्लेयर्स। इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड में क्या हो जाएगा? इंडिया इज आल्सो गेटिंग एडेड, ठीक है? अब देखो, एक काम करते हैं, इसको हम घेरते हैं ब्लैक पेन से, इजराइल, यूएसए, यूएई, इंडिया, ये चारों मिलके क्या बना? What is formed? Which I have highlighted with black pen. ये इंपॉर्टेंट इन एडिटोरियल्स में आ रहा था। I2U2, वेरी गुड, यस, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। सो अब्राहमिक अकॉर्ड्स एक्सटेंशन इज I2U2, है ना, which is also sometimes called as West Asia's Quad, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है?
In general, if I say Quad countries, which are those Quad countries? Quad में कौन कौन कंट्रीज है बताइए? यूएस है, इंडिया है, और कौन कौन है? ये सब टर्म एडिटोरियल में मेंशन था. वेस्ट एशिया क्वाड, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. हाँ, वेरी गुड. यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. ठीक है. अब इसमें क्या है, वही चीज है, लेकिन दो कंट्रीज को रिप्लेस कर दिया गया. यूएस एंड इंडिया इज देयर, बट यूएई एंड इजराइल इज देयर इंस्टेड ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. तो वेस्ट एशिया क्वाड कहला गया है ना, वेस्ट एशिया रीजन के लोग को. हालांकि आप बोलोगे इंडिया तो वेस्ट एशिया में नहीं आता, बट टर्म ऐसे यूज किया जा रहा है. I2, U2, वेस्ट एशिया क्वाड, दीज टर्म्स आर बीइंग यूज्ड. ठीक है. तो क्यों बता रहा हूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था. तो कॉन्सेप्ट तो पहले पता होना चाहिए, है ना. व्हाट इज दैट? ओके. टर्मोइल, ट्रेजेडी एंड टेनेसिटी इन नेपाल, दिस वी हैव डन विद दिस, है ना. आप जाओगे, प्लीज गो टू द लाइव चैनल. प्लीज एवरीवन सब्सक्राइब टू द चैनल. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. गो टू द लाइव सेक्शन, स्क्रॉल डाउन, and you will find this video. I have done a video on Nepal crisis. Okay. Then Canada की जो national security advisor है, he was actually in India recently, Nathalie Drouin, and there are talks that are happening between India's NSA and Canada's NSA. I'm sure you must be aware of these issues, है ना, Niger killing, etc. So we have already done in earlier classes. So there were talks regarding it. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये न्यूज में था, कल मैंने देखा. आसाम्स, आई थिंक इज अ वेरी फेमस सिंगर फ्रॉम आसाम. हिज नेम इज मिस्टर जुबीन गर्ग. ही अनफॉर्चुनेटली डाइड इन वेयर? कहाँ उनकी डेथ हो गई एंड व्हाट वाज द रीजन? Yes, he actually died in Singapore. He had gone to perform something, I think, and unfortunately he died due to scuba diving. Yes, सिंगापुर में. So यहाँ पर इंडिया है. This is Singapore, very near to equator. He had gone for, I think, for performing something, है ना. सिंगर. स्कूबा डाइविंग इसको कहते हैं. एंड स्कूबा डाइविंग थोड़ा सा रिस्की भी होता है, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू वियर ऑल द सेफ्टी एटसेट्रा एंड ऑल बेल्ट्स, एंड ऑल द सेफ्टी फीचर्स. तो यही इसमें था. एंड आई थिंक समथिंग हैपेंड, सम इंसिडेंट हैपेंड. ही वाज गिवन सीपीआर. सीपीआर मतलब वही होता है कि चेस्ट को प्रेस किया जाता है ना, ताकि उनकी लाइफ बचाने के लिए, बट स्टिल एक्चुअली ही कुड नॉट survive, etc. So that is why it was in the news. तो ये आपको पता होना चाहिए. Then ये वाला तो हम लोग कर लिया. EU proposes new Russia sanction. ये हम लोगों ने बताया, है ना. Even Indian entities, this also we had done earlier also, that European Union were imposing, even America, I mean USA is also imposing sanctions on India, or trying to pressurize so that we cannot have much trade with Russia. So these are the things. तो इसमें तो इसमें कि इंडियन एंटाइटीज विल बी इंपैक्टेड, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. आई हैव डन इट. अच्छा, आपने स्कूबा डाइविंग किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ठीक है. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे.